या नमस्कार सभी को। हमारे सभी इस राउंड टेबल डॉक्टर के SCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आज राउंड टेबल 19 जून 2022 को सभी का स्वागत है। और जो हमारे एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे डॉक्टर के अग्रवाल के यूट्यूब फेसबुक पेज पे जो उनके फॉलोअर्स हैं और उनको जो फॉलो करते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत है। और आज हम एक डिफरेंट टॉपिक लेके चले हैं जो कि एनवायरनमेंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट है। और हम अगर एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में भी हम एयर, वाटर और नॉइज बात करते हैं तो सॉइल इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। और इसका हम आई थिंक अपने इस प्रोग्राम में नहीं लिया हमने। और थैंक्स टू डॉक्टर जो है दीपंकर शाह जी, मैंने डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक को हमने आज अपनी इस राउंड टेबल में इंक्लूड किया है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे और इस पे हम कैसे जो है सभी का जो लोग मिलके कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं, तो इस पे कैसे काम करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देख करके इस अपना जो है इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी एज पर जो रिसेंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट है 2022 में, विच वाज रिलीज बाय सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 30% ऑफ द इंडिया जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर डिग्रेडेशन। तो देयर इज अ वेरी ग्रेट कंसर्न दैट 30% ऑफ द जो लैंड है वो इंडिया की जियोग्राफिकल एरिया की अंडर डिग्रेडेशन है। और डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है? decline in productivity of land in terms of biodiversity and also economy, which is triggered by various factors including climate change and human induced factors. तो बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर लैंड 30% लैंड डिग्रेड है रही है इन इंडिया, पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर लैंड है इज अबाउट 46% एंड फॉरेस्ट अबाउट 22% आर द टू मोस्ट कॉमन जो काइंड ऑफ लैंड गेटिंग डिग्रेडेड। तो ये दो ही बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्रीकल्चर से हमारा सबका जो है फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। और फॉरेस्ट और अगर लैंड है उसमें अगर आपका डिफरेंट अगर हम जो स्पीशीज हैं प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं होगी और प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे और डिग्रेडेड है तो हमारे क्लाइमेट चेंज पे और एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सो इट मीन्स इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस एंड लीड्स टू फूड इनसिक्योरिटी through lower yield and climate change, as degraded and release also soil carbon and nitrous oxide into the atmosphere. As per recent report, the report जो release हुई है, among 14 states that have been over 10% rise in the share of degraded land. तो उसमें जो particularly जो 14 states में है तो उसमें सबसे ज़्यादा land degradation है, 10% more as compared to other states. In Delhi, about 25% land is degraded, under degradation. And other states include where more land is degraded is the Mizoram, Punjab, Arunachal Pradesh, Assam, Tripura, Nagaland. तो ये और बाकी जगह भी है, but these are the more land is being degraded there. अभी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रही हैं। जो ईसा फाउंडेशन ऑफ सदगुरु श्री जग्गी महाराज जी के है, they have initiated is a Save Soil movement. This is a global movement to initiate a conscious approach to soil and planet in all. It is a movement to have policy to revitalize the ecology and soil. गवर्नमेंट पे इनको है कि एक मूवमेंट हो, गवर्नमेंट पे प्रेशर हो, गवर्नमेंट लोगों का जो है जुड़े, so billions of people are joining. This Sadhguru Maharaj has started his journey also to cover 30,000 किलोमीटर across 24 nations. तो उन्होंने ऑलरेडी इस पे कर दिया। मैं अभी मुंबई में था, पुणे में था, तो वहाँ भी उनके बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। ये स्टेटेड जो अभी 12 जून को उधर भी थे मुंबई में और भी जगह सब जगह। तो ही स्टार्टेड दिस इज ए कैंपेन की सेव सॉइल मूवमेंट है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो इनिशिएटेड सेव द सॉइल कैंपेन with focus on soil rejuvenation,
crop productivity enhancement, and this is for the sustainable environment friendly practice. The approach, which must include the soil testing, recumulation and the conservation, बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ऑफ न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट्स की है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कितना जो है कोई भी एक्सेस में. देन वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिस तरह की जरूरत है, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. दीज आर दी वेरियस थिंग्स दैट मस्ट बी इन आवर अप्रोच, मस्ट बी इंक्लूडेड. हम इस पे हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे. और मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को डॉक्टर दीपांकर शाह जी हैं जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर सीपीसीबी में रहे हैं और अभी भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत से एक्टिवली काम कर रहे हैं. ये टॉपिक मैंने उनसे ही डिस्कस किया था और इनका बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन था, इसको हमने डिस्कस किया. तो मैं शाह जी से स्टार्ट करते हुए फिर मैं त्यागी जी से एसके त्यागी जी से उसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा और फिर विल कंटिन्यू दैट. थैंक यू अनिल जी. प्रणाम त्यागी साहब. पीसी त्यागी साहब. एसके त्यागी साहब. पीसी त्यागी साहब आए थे सुना था? नहीं, अभी आज ज्वाइन नहीं कराया था. पीसी त्यागी साहब ने आज ज्वाइन नहीं कराया. तो ठीक है, सबका नमस्कार. हम लोग जब भी सॉइल का बात करते हैं तभी भी सॉइल इज आवर सबस्ट्रेटम, उसी के ऊपर खड़े रहते हैं. जस्ट थिंक ऑफ द कंडीशन इफ वी डोंट देयर इज नो सॉइल. सोच लीजिएगा कि सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है. जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं वही सॉइल है. सॉइल इज सच ए थिंग जो रिवर कोर्स को डिजाइन करते हैं. इससे टेरिस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन. हमारा सी के अंदर चले जाइए, वहां भी जो सबस्ट्रेटम है दैट इज आल्सो आवर सॉइल. द माउंटेन्स में चले जाइए, दैट इज आल्सो आवर सॉइल. तो सॉइल डिसाइड्स एवरीथिंग. स्लोप क्या होगा, फ्लैट प्लेन क्या होगा, रिवर कहां से चलेगी, और एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द सॉइल. कौन सा सॉइल प्रोडक्टिविटी होगा, हाउ इट विल बी मेंटेन, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द सॉइल. बट वी रियली इग्नोर आवर सॉइल. दैट्स व्हाई यस्टरडे वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन. हम लोग अनिल जी से बात किया था. हम लोग सब तरह के काम करते हैं बट सॉइल को सबसे ज्यादा हम लोग इंसल्ट करते हैं. Always we compare Western countries and our countries, Eastern countries. देखिए बेसिक डिफरेंस, they are able to maintain each and every square inch of their soil. उनको लगता है कि फोटो देख के भी लगता है एवरीथिंग इज फोटोजेनिक, एवरीथिंग इज ग्रीन. हमारे यहाँ वो नहीं है, बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग आवर सॉइल. एंड जो फिगर मैं भी बताने वाला था, 30% is under degradation. अब the degradation जो हो रहा है, that means our productive land, from where our food will come, that is getting lost. Very serious and sincere issue for us, how to recoup those things gradually. This is an important aspect for us, and we really cannot afford to lose our soil. Now the thing is that our Earth supports about 8 million plant and animal species in various geographical ecosystems, and everything is designed by the soil, maintained by the soil. And 150 years of the coral reefs are surviving on the soil. That is our substratum. So the thing is that we keep on telling this is the Earth surface is measured. If we measure the Earth surface also, this is the soil surface we are measuring, where we are able to do some work, we are able to produce our food and all these things. And it is estimated that 1.6 Earth is already required on one hand, and 30% of which is getting deteriorated. So think the condition of our soil. Now, क्यों हुआ है ये सब चीज? Because of us only. No one came from the space to destroy and pollute our environment.
It is we who made it all these things because of our comfort, because of our luxury, all these things we have created all these things. अब देखिए जो soil जो है that holds the water. It reserves groundwater for us and it maintains the productivity of the soil. And also this is producing carbon sequestration process is done inside the soil. We all are made up of carbon, and carbon is also being neglected nowadays. We are discharging carbon into our atmosphere, and when carbon in the atmosphere, it plays a heater like activity. It creates heat. But when the carbon is in the soil, it is a coolant. Now the thing is that the CO2, whatever is generated from our respiratory system, whether from any organism, whether plants or things, this gets converted into carbonic acid. And this carbonic acid, when it comes to the soil, it helps and triggers carbon binding process. We are neglecting it. We are not trying to understand why it should be the free carbon is not useful for us. It carbon in the form of carbon dioxide, and if it is not flowing in the atmosphere and it rather comes down to our earth, it is very useful for us. Now this is the most active part of our soil is the soil humus. हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, आज भी देखते रहे, soil humus is missing everywhere. Soil humus, that soft part of the top layer of the soil, which absorbs solar light. And nowadays, because of in the absence of those humus, the sunlight is getting reflected back into the atmosphere. This is the another problem we have created in our art. I do not know how much time I have been given, but I will stop whenever there is something. Anilji, please. No issue, sir. You can continue, sir. Yeah. Now the thing is that if this sunlight is preserved in our soil, that comes in the soil, it goes into the soil and helps in carbon sequestration process. But if the soil is devoid of topsoil, particularly the humus, it acts as a mirror. And when the sunlight falls onto the mirror, it gets back into our atmosphere, getting and making our atmosphere hot. That means that we are not able to capture that solar radiation for our purpose. Solar radiation is nothing but the energy. It is all, if it is not coming and absorbed into our soil, it is a waste. Rather, it is helping in increasing the overall environmental temperature. So now in this context, if you really trying to understand why we are so negligent in attending our soil, because we have never considered environment as one system. Environment is one system is we never considered. हम लोग सब जानते हैं कि 5 तत्व हमारे पास उपलब्ध है, 5 तत्व हमारे पास उपलब्ध है, बट वो 5 तत्व में आप देखिएगा कि हम लोग सबसे नेग्लेक्टेड जो रहते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं वो सॉइल के लिए अलग साइंस ये कभी पॉसिबल नहीं है. इट इज एन इंटीग्रेटेड साइंस. अब देखिए सॉइल कितना तरह की वेदर मेरीन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, हिमालयन सिस्टम रिवर और हिली टेरेन को रिवर इकोसिस्टम सपोर्ट करता है, डेजर्ट को सपोर्ट करता है, स्वैम्प को सपोर्ट करता है, वेटलैंड को सपोर्ट करता है, रिवर बेड को सपोर्ट करता है. हम लोग दोज हु आर टेरिस्ट्रियल उनके लिए सपोर्ट करते हैं, एंड दोज हु आर आर्बोरियल, दोज हु आर एरियल एनिमल्स आल्सो, they are also have to come to the soil. Various types of ecosystem is being supported by the soil.
Now, the thing is that why it is getting deteriorated. That is we have not paid attention to our soil. We have not able to maintain the land use plan and planning in our planning system. We have not incorporated all these things. We have never considered this beauty and relationship of the slope, the gradient. Rather, we have tried to capture everything and designed our cities, towns in our own way, and now we are facing the floods. This is nothing. This is the change in the land use pattern, change in the terrain, change in the sloping system has created many. We have invited and created all these people, all these things. As on date, also 2 billion people are dependent on the wood fuel to meet the primary requirement of their energy needs. That means the soil also gives us the energy. And if you are not really able to protect 2 millions of people, they are also dependent on them. 4 million people really dependent on primary and natural medicine. And the soil, the people, the natural, how many people are going to hospital and all these things? Most of the people are dependent on the natural medicine. And 4 million people are dependent on it. And just imagine the 70% of the drugs used for the cancer and other things comes from our nature. All medicine comes from the nature, and where the nature is accommodated on the soil. And the ecological process, the sustain, this is the greatest problem we have done. Now, what we have done in the past few years, about 120 years, what we have done, because all these problems came into 120 years, around 120 years. The 70% of the land surface is significant. The natural thing has been altered. 66% of the ocean area is exploring increased cumulative effect, because whenever the impact, land and soil, soil and the river and the ocean, all are interlinked. And all these are, when these are interlinked, a problem created in any of the components is bound to get altered the natural system. Our native biomass, I was talking about the humus, there is a study internationally done, native biomass has been lost to the tune of 30%. Sir, the land, Anil ji, jo aap bata rahe the 30% of the land degradation is that we have lost the natural biomass. Natural biomass means we are disturbing the entire diversity and food pattern of the things. Resulting, what is going to happen, we'll come to the conclusion very soon. The 20%, 5%, 20 to 25%, the plants and animals are at risk nowadays. Because we have failed to the 1 million people have extinct already been done. And the resultant is this, because the 559 of 6,190 domesticated mammals exclusively used food have been lost. Ab sochiye jara, the mammals we used to use as our food, and another 1,223 are on the verge of extinction, because everything is associated with soil. Now, it is the fact that humans need a healthy system with all its components intact without any alteration. We need to think in this direction, how we should maintain without altering the natural system. Ecosystem does not need humans to survive.
because the humans probably creating problem, and we need to think ourselves how we can manage our things. Now, the thing is that pollution is one of the aspects, climate change is climatological aspect, the biodiversity safety is another aspect. Now, all the things are linked. All the things are linked nowadays, and we have to think in this direction how we can go creates. Now, the carbon creates and soil preserves. तो It मैं is create. Hello. उनको स्टूल दे लो. Hello. Hello. I will stop here. I will stop on 2-3 minutes. Carbon creates. We talk about the God creates. It's not, if you really see, it is the carbon that creates. And whatever is created, soil preserves. This is the statement nowadays is very famous. And the soil security is our food security. Soil security is our prosperity. Only soil can give us anything and everything. Carbon creates and soil preserves. Now I'll end up with things. I was going through yesterday when I got this travel. Soil represents the largest terrestrial carbon pool. My concluding slide. Soil represents, and it is also a study paper. I'm just quoting this from the study paper, written handwritten. So allow me to speak. 4 lines only. Soil represents the largest terrestrial carbon pool. Carbon sequestration by soil minerals represent a promising strategy for climate change and mitigation. Soil protection can be the climate change resilient. We talk about everything, but soil can give us. It is a study carried out in 2022. Soil carbon storage can be increased by 453% to 757. It optical cultivated by the land type. If we know what type of soil it is, what it was, and how it is presently, we can go back and bring the increased carbon storage thing. Conservation of agricultural practices such as zero tillage and residue retention, because we are talking about the agricultural residue burning in thermal power plants. That is a dangerous thing we are doing. It should be done at site so that the minerals, organic manures are not lost. Rather, it goes back to the same soil. Soil amendment, especially the biogas, has been advocated as a promising technology for simultaneously increasing crop yield and mitigation climate change and things. So this is the thing the world of people are saying. I'm not saying the last sentences. I took it from the journals of international journals. So if we really respect our soil, अगर हम अपने soil को respect करें, we can bring back the sustainable development. We can be protected from the so-called climate change impacts, because the soil absorbs everything. Soil is our past, this is our present, and this is our future. हम soil से आए थे, soil में ही रहे हैं, और soil में ही हमें फिर वापस आना है. Thank you very much. Thank you so much. थैंक यू शाह साहब. आई थिंक बहुत डिटेल में आपने बहुत रिसर्च अपना करके आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत डिटेल में. एंड इट विल बी रियली, आई मीन, गुड टू प्रिजर्व अवर सॉइल. अदरवाइज इन फ्यूचर जो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट हम एक्शन से ले रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं उतना आ रहा है.
आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इसी तरह से जो सदगुरु महाराज ने जो सेव सॉइल मूवमेंट स्टार्ट किया है, दैट वाज द रीजन, और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने ये किया है कि हमारा सब कुछ जो है लाइफ जो है, इसलिए टॉपिक भी हमने लिखा है यही है कि जो डिस्कस करके किया था साहब से कि सेव जो है सेव सॉइल, तो सॉइल प्रोटेक्शन मींस फॉर प्रोटेक्शन, अर्थ प्रोटेक्शन एंड लाइफ प्रोटेक्शन, तो दोनों ही है। अर्थ भी हमारी उसी से जुड़ी हुई है और हमारी जो है लाइफ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि एनवायरनमेंट हेल्थ दोनों के एक दूसरे के इंटीग्रल पार्ट हैं। अगर हमारी एनवायरनमेंट और अर्थ में सब ठीक है और बैलेंस्ड है, सब कुछ है और नेचर के बेस्ड है, तभी हमारी लाइफ हेल्थ चाहिए। तो आई थिंक बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे डिटेल में दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर डॉक्टर एस के त्यागी जी से, जो ऑलवेज बहुत ही डिफरेंट फोरम में इनके एक्सपर्ट भी व्यूज होते हैं, और आज के सब्जेक्ट में थोड़ा सब्जेक्ट डिफरेंट है, एनवायरनमेंट से थोड़ा सा, जो एनवायरनमेंट का पार्ट है थोड़ा सा हटके है, तो मैं साहब त्यागी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने व्यूज एक्सप्रेस करें। Thank you very much. Though I am not expert in soil and agriculture, but I can put forth the general views. As Dr. Saha has already elaborated in detail, agriculture ecosystem basically is not alone an ecosystem, but this is linked through a network of the other ecosystem, like various streams, rivers, groundwater, nutrient cycle, etc. And I think in US, they bring first law on this in 1990. Used to conserve the soil and having some penalty clauses also. And then in 1996, Federal Agriculture Improvement in Reform Act was passed to establish the wetland management, their restoration, and soil erosion control regulation, which was having wider impact on the conservation of the soil fertility, as this is not only the soil fertility, but also the erosion which degrade the soil mass on the land. So this is an integrated approach for the soil conservation, including the mitigation of the erosions, conservation of the soil fertility by avoiding the or minimizing the synthetic fertilizers and pesticides, and enhancing the organic manures and green manures. I remember when we were studying in class 6th or 7th itself, we were taught good agriculture practices. And at that time, these were also being practiced by the farmer, because I am a son of a farmer and I had my initial life only in the village. So people were growing moong dal and other crops like bhecha. And then when they were green and grown for a few feet, they were plowing it in the soil. And it was becoming a manure after some time. And they call it green manure. And beside that, they were using the organic manure prepared by the composting of the gobar and other plant material. So these were very good practices, which nowadays are rarely being encouraged.
So soil fertility can be maintained with these practices, in my opinion. And second major aspect we can have of the crop rotation. Now we have forgotten the crop rotation at all. I myself, when I was involved in the agriculture, was growing every type of pulse, cotton, all grains, sugarcane, everything was growing in our own land only. Not only for our consumption, but we were also selling some of them. So this crop rotation was very helpful in diversifying the soil conservation. Different type of root systems are there of the crops. So that was taken care of. Similar type of crop are not good for the fertility. So there are, you have root, taproot and the adventitious. So both type of root, the root crops were being grown. Then there are legumes. So legumes were also fixing the nitrogen and enhancing the uh, uh, soil fertility. And we have to go to these old practices in a wider perspective. And beside that, there are other strategies also to conserve the soil fertility, that is tillage of the land, which is not being used frequently for the sowing the crops. So that is saved from the erosion, as well as its water holding capacity is increased. Moisture of the soil is maintained by the tillage. And also to some extent, the erosion is also can be controlled. Then in hilly areas, contour farming is very, very important, so that you can prevent the, and this is generally already practiced. Then strip cropping can be used to have some buffer from the rivers or water bodies. And one more practice has occurred in the last many decades, that in village area and in our agriculture area, there were so many wetlands. Now they are being captured and they are being converted into the agriculture, which is not good practice, because they maintain the balance of the groundwater and groundwater recharge. So we have to have integrated policy: soil conservation, agriculture soil particularly, and the wetland in the countryside. Now I'm not talking of the urban area, that is important at their place, but also in the rural area or countryside, they both are equally important. So with that, I stop here with my these inputs. So thank you very much for giving me this opportunity. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत डिटेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट्स बताए, एंड डेफिनेटली this approach, the integration, because we are not just this is a lone ecosystem, and soil conservation will definitely depend on the other linking ecosystem, wetland and other, or whatever the groundwater and other issues. That is very, very important. Sir, thank you so much. Now sir पार्थोस त्यागी सर ज्वाइन किया है, और अभी सर आई थिंक पहले नहीं थे तो मैं इनवाइट नहीं कर पाया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी पहले पार्थोस त्यागी जी से, उसके बाद डॉक्टर संजीव अग्रवाल को, कि सर आप आज के सब्जेक्ट पे जो हमने लिया है थोड़ा डिफरेंट है, और पार्थोस त्यागी जी से सर रिक्वेस्ट है कि अपने व्यू एक्सप्रेस करें। सर सर म्यूट है आपका, पार्थोस त्यागी सर।
Okay. It is unmuted now. Yes, sir. Yes, sir. My greetings to all, and apologies that I am late to join the meeting, so I must have missed the more important points that have been made. And I just heard Dr. S.K. Tyagi mentioning how it is our loss by not taking care of soil or crops. Let me point out that our attention to take care of soil has been missing right from the stage of making a law for it. There is a law for water, there is a law for air, and of the three major domains, soil, water, and air, soil has no provision to see that it is duly protected or conserved. Whatever is done is incidentally. If you want to protect groundwater, you try to see that soil is also protected. But taking care of soil per se is missing in our legal framework. The second thing is that so many things or so many practices have in the meantime damaged soil. That dumping of municipal waste is one example. The tilling in a manner that soil erosion takes place. Soil takes a very long time to get built and very short time to get eroded. So that is also totally against conservation of soil, and engineering efforts are necessary to see that erosion is controlled. Besides, we need to have, not for the purpose only of agriculture, but for the purpose of horticulture, for the purpose of creating meadows or whatever nature is there to restore that nature. We need to have laws about what can be added to soil and what is the restriction or norms to be met before anything is put on soil. Not only to take care of groundwater, but also to take care of soil per se. This part is very much missing and needs very urgent attention. And as I find that in case of pollution control, there is only the point where pollution is getting emitted, whether it is at the top of a stack or it is from an effluent pipe, that every effort is concentrated. Whereas the condition of river is ignored. Similarly, in case of soil, let us not repeat the mistake of only setting standards of what can be put on soil, but we should also ensure that soil is conserved by prevention of erosion and by deposition of fresh soil during floods, and all such measures which keep soil healthy. Unfortunately, the attitude of man has been to take advantage of natural resources, whether it is water, rocks, minerals, air, or soil, but a sense that we owe a duty to the environment is missing. This was very much implanted in our tradition when we considered Prithvi Mata, we called Ganga Maiya, and having established that relationship in practice, our attitude towards them and what we can or cannot do would be very well defined. Similarly, here I think those traditions of paying high regard to these natural resources, that of Mata, they should be restored. So that is a cultural effort, but its effect will be in our proper attitude and actions
to ensure soil conservation. Thank you very much. I would like Thank you, to sir. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much. Your encouraging words definitely. And जो हमारे अभी और colleagues हैं, speakers हैं, उन्होंने जो बताया सर ने उसको बहुत ही strengthen किया. And it was really to have it implemented in the ground. This is very important. Making law is we have the from the Water Act 74, Air Act 81 from so many years, more than 40-50 years. But what is situation? So this is not only to make the law, but to have in the ground and in the practice in the ground, and then result is there. I think these laws also, the Water Act and Air Act, need to be implemented so way that actually impact in the ground. So definitely thank you, sir. Now I'll request Dr. Sanjeev Agrawal ji to have expressed his views, and he was also in the CPCB additional director, and he was both work in the air sector and water sector. So over to Dr. Sanjeev Agrawal ji. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. First of all, thanks to everyone, and whatever the remarks has been made by my colleagues and my seniors, it's very well explained and very well done. Basically, I just want to add few points, because I myself I'm not basically belongs to farmer side, but basically this particular soil pollution or whatever is, we say that contamination, sometimes we say that fertility of the soil. So all these are related, basically all metrics, water, air, everything is interlinked with the soil. Generally we say that for human being, we say that particular person is from which soil. So soil is such an important word, important thing, where we consider this particular, that person's behavior, person's whatever, means everything will depend on the soil. So soil is a very important term. I just want to share 2-3 things. Although I am not the soil expert, but I got the opportunity to work on soil also. I have developed a soil lab in Bhopal regional directorate when I was posted there. Actually, one of that case is that methyl isocyanate. There was a disaster. So what I found that in that particular project, methyl isocyanate has got accumulated in that soil, and how this is metabolic activities, or whatever that human being metabolic activities basically converted due to that pollution. So that is very, very important, because ultimately it gets stuck on the soil, it gets stuck on the plants, and whatever the emissions was there due to disaster, everything has been stuck on the soil. So everything comes on the. Secondly, that one of that Ujjain project, that is Karnal technology, where the primary treatment of sewage is being given, and then they are discharging to some several acres of land, and they are just growing some trees. So what I found dramatically, that particular nitrogen and phosphorus were very, very important. These are the basically you may call it fertilizers for soil, because this particularly connected with the biodiversity. So if the nitrogen and phosphorus, only carbon is there, nitrogen and phosphorus is there, then the diversity may be very less. So ultimately these are connected. And what I found that tragically, I found that particularly whatever the phosphorus present in the water, in the wastewater, that is converting into the triphosphate. Phosphorus is converting in triphosphate due to the reaction or maybe the composition like that, it is converted into triphosphate, and the whole layer of the soil has converted, maybe 10 centimeter layer of the several acres of that particular thing has converted into triphosphate. So there is automatically there is a production of triphosphate. So this particular phosphorus which is present in the water, in the wastewater, after primary treatment, is getting converted through humus, and then some good things have come up. So I just want to say that soil is very, very important with respect to nature, with respect to biodiversity, because biodiversity is not there proper, then your food security will be very important. Means
you are away from the food security. So I think these terms are very well related with that food security. If soil is not good, you will not get biodiversity, you will not get food. So these are all linked. So thank you very much for giving me chance to speak. Thank you, Dr. Saab. That is Sanjay Agrawal ji. Now I'll request Neeraj Tyagi ji though he is always in all field of the environment, he has a lot of interest, and particularly in this subject, I request Neeraj Tyagi ji. जी सर्वप्रथम परितोष त्यागी सर को नमस्कार और अनिल साहब को नमन और सभी विद्वान यहाँ अग्रवाल साहब हैं, साहा जी हैं और सभी को प्रणाम। और जहाँ तक ये सॉयल कंजर्वेशन की बात है, सॉयल प्रोटेक्शन एक्ट एक बना हुआ है हमारा इंडिया में। एक तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और एक मुझे एक महाभारत कालीन एक वो जो है ना एक याद आ रही है, एक दुर्योधन और युधिष्ठिर का आपस में संवाद जब हुआ था तो दुर्योधन ने बोला था जानामि धर्मा न च प्रवृत्ति, कि मुझे धर्म तो पता है लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं धर्म के रास्ते पे चलूं। तो हमें सॉइल प्रोटेक्शन के मेथड नॉलेज ये सब है, लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति नहीं हो रही कि उस सॉइल इरोजन के लिए कुछ काम करें। जबकि सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो कि एक बहुत ही पायनियर प्रोग्राम है, तो उसको मीडिया भी हाईलाइट नहीं कर रहा। मीडिया में दूसरी चीजें हाईलाइट हो रही है जो कि जरूरी नहीं है, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में अगर मनुष्य की हेल्थ के लिए होता कि ह्यूमन हेल्थ कार्ड, तो अभी तक पूरा जो है उसको हाईलाइट किया जाता। तो ये किसानों के लिए जो सुविधाएं इस तरह की दी जा रही हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए और लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और जो हम धर्म जानते हैं अपना, उसके लिए हमारी प्रवृत्ति भी हमारे अंदर पैदा हो। तो बहुत शॉर्ट में, अभी टाइम क्योंकि कम है, मैं थोड़ा सा ही कहना चाहूंगा कि ये जो कारक हैं उसमें जो डिफरेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा कारण तो जलवायु है जो कि सॉइल इरोजन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा जो शेप है, जो भी हमारी जहां पर भी जमीन है उसकी शेप, वो भी एक रेस्पॉन्सिबल है। मिट्टी का प्रकार किस तरह का है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, किस तरह की है, वो भी एक जिम्मेदार है इसके लिए। और उस पर वनस्पति कैसी हम उगा रहे हैं, इसके अलावा जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और हमारे देश में जो भूमि कटाव की जो समस्या है ये दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। जल ग्रहण व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो है ये सॉयल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी उपयोगिता खासतौर से जो हमारे हिली स्टेशन है, पर्वतीय जल संग्रह करने से इसमें और बढ़ जाती है हमारी सॉयल प्रोटेक्शन। अभी पीछे भूस्खलन वगैरह हुए थे जैसे केदारनाथ वगैरह में, तो वहां पर ये स्टडी होना चाहिए कि उसके रीजन क्या थे। ज्यादातर जो जल संग्रह वाले जो एरिया है वो ढलानदार होते हैं, इससे ढाल का भूमि का जो एरोजन है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ज्यादा ढाल होगा तो जो पानी का स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। और गिरती हुई वस्तु के नियम के अनुसार अगर स्पीड खड़े ढाल के स्क्वायर रूट के अनुसार बदलता है, यदि भूमि का ढाल 4 गुना बढ़ जाता है तो बहते हुए जल का जो स्पीड है वो 2 गुना हो जाती है। तो बहते हुए जल की स्पीड 2 गुना हो जाने पर जो उसका इरोजन है उसकी क्षमता 4 गुना अधिक हो जाती है। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है पानी की वो 32 गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि ढलानदार स्थानों में सॉयल इरोजन ज्यादा होता है। तो मुख्य रूप से जैसे अभी स्टडी कुछ लोगों ने की है तो उसमें 2 ही पार्ट है जिसमें कि 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो बायोलॉजिकल उपाय होते हैं, जैविक उपाय, और एक अभियांत्रिक उपाय। जैविक उपायों में जैसे कि फसल और वनस्पतियों में नियंत्रित करने के लिए जैसे जैविक जो अलग अलग विधियां हम अपनाते हैं वो जैविक विधियों उपायों के नाम से है। और उनको जो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए जैसा कि साहा साहब भी बता रहे थे, कंटूर कल्टीवेशन है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, टिलेज प्रैक्टिसेस हैं, विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हम जुताई करते हैं विभिन्न सॉइल्स में, जैसे बुआई, जुताई, उसका भू परिष्करण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए भी हम करते हैं कि जो इररिलेवेंट वेजिटेशन है उसको हटाने के लिए, तो वो एक लीनियर उसमें किया जाना चाहिए। और जो सॉइल इरोजन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास जो टेक्निक्स हैं, जो हमारे पास जो मेथड्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं।
यानी कि इन कार्यों की दिशा खेत के ढाल के पैरेलल ना होकर परपेंडिकुलर होती है, जिससे कि सॉइल इरोजन में कमी आती है। इसके अलावा हम रिज फरो सिस्टम, क्यारियां बना सकते हैं, जिससे कि वर्षा जल के प्रवाह को कम करके सॉइल इरोजन रोका जा सकता है। पट्टीदार खेती, जिसमें कि उर्वरकता बढ़ाने के लिए सॉइल इरोजन को रोकने के वो प्रयोग में लाई जाती है। तो ये सब अगर चीजें हम किसानों तक पहुंचाएं और हमारे एनजीओ इसमें बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। एक इस तरह के वॉलंटियर, सॉयल हेल्थ वॉलंटियर्स हम बना सकते हैं और ये अवेयरनेस पूरे देश में फैलाई जा सकती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू नीरज जी। बहुत जी थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी तरह से और उसको और कॉमन लोगों के लिए जो हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, डॉक्टर के अग्रवाल के फॉलोअर्स यूट्यूब फेसबुक पे बहुत हिंदी में भी बहुत अच्छे से समझाया उसमें, और किसानों के लिए जो है अगर डाउन द लाइन जो सबसे जो लोग इम्पोर्टेंट हैं वहां तक अगर बात पहुंचे तो बहुत इम्पोर्टेंट। तो आज हमने बहुत से पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया एंड सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक के डॉक्टर साहा को जो है बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सजेस्ट किया। फिर उसके बाद हमारे सभी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, डॉक्टर एस के त्यागी जी ने, और ऑलवेज सर पार्थोस त्यागी जी की सर ब्लेसिंग तो हमारे ऊपर रहती है, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, नीरज त्यागी जी, सब लोगों ने, हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया एंड डेफिनेटली इससे हमें जो हमारा डिफरेंट जो ऑल फॉलोअर्स जुड़े हैं और ये ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब फेसबुक पे, जो लोग दोबारा देखेंगे तो इसके बेनिफिट होंगे और इस पे हम आगे किस तरह से काम करना है, जो पर्टिकुलरली जो सॉइल प्रोडक्शन या सॉइल रिड्यूस टू सॉइल इरोजन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। जैसे अभी हमने जिक्र किया था जो सदगुरु जगी महाराज जी ने जो कैंपेन मूव सॉइल से सेफ सॉइल मूवमेंट शुरू किया है और उन्होंने डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्री में जा के वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, बिलियंस ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन दिस मिशन, और किस तरह से उसको जो है जो अप्रोच है किस तरह से अपनी जो है सेफ सॉइल मूवमेंट से जुड़ें। तो उसी में हम जो SCFI की, डॉक्टर के SCFI की आज टीम है, हम लोगों ने भी ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपने लिया और आगे भी इस पे काम करेंगे। अनिल जी हमारे गुप्ता जी बार है हाथ तो कुछ बोलना अरे सर गुप्ता जी को मैं, अच्छा जूम यूजर में आज गुप्ता जी नाम नहीं देख पा रहा हूँ सर, सॉरी सर, मैं आज आपका नाम नहीं आ रहा था, मैं जो है मैं तो जूम यूजर देख रहा हूँ, मैं सोचा somebody else has joined जो है ना। I can see him, please उसको प्लीज दे दीजिए। अरे सर सॉरी, मैं जूम यूजर में ना आपकी फोटो देख पाया ना जो है उसमें आया, जूम यूजर में नाम भी नहीं देख पाया। तो गुप्ता जी मेरे SK गुप्ता जी हैं सर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सॉरी मैं आपको देख पाया तो इसलिए नहीं। मैं सिर्फ 2 बात ऐड करना चाह रहा था, इतनी सारी बातें आपकी सुनी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है वो ये लगती होती है कि वाकई सॉइल को एज ए रिसोर्स आदमी ने बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल करना शुरू किया और इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया। और जैसे एयर और वाटर की तरफ तो आदमी ने ध्यान देना शुरू किया क्योंकि वो शायद डायरेक्टली आदमी को इमीडिएटली इफेक्ट कर रहा था, और ये जो सॉइल थी ये शायद बहुत इनडायरेक्ट तरीके से इफेक्ट करती है आदमी को और इसका लॉन्ग टर्म होता है। तो शायद आदमी इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहा। लेकिन 2 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो उसको तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से सॉइल का काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एक तो माइनिंग और दूसरा ये लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये माइनिंग जो है ये तो बहुत ही भयंकर चीज़ है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है माइनिंग एक्टिविटी है जो नीचे की सॉइल को लाके ऊपर ओवरबर्डनिंग की तरफ फेंक देती है और माल उसमें से निकाल लेते हैं। सॉइल का पूरा वहाँ की जो पूरी टोपोग्राफी है वही बदल देती है ये माइनिंग। तो इससे मुझे लगता है बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है सॉइल का। और दूसरा ये जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी कंट्री में बेइंतहा हो रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा कि सॉइल का क्या होगा। लोग मतलब आज मैं पढ़ रहा था पेपर में कि गडकरी साहब ने कहा कि हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 108 दिन में इतने लंबी किलोमीटर हमने रोड बना दी। वो रिकॉर्ड तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ ये जो इम्पैक्ट हुए सॉइल के ऊपर, क्या किसी ने इसको असेस किया कभी? और दूसरा मुझे लगता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनका जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उसमें भी कहीं सॉइल की बात तो कोई करता ही नहीं शायद, और ना कोई वहाँ का एक्सपर्ट पूछता भी है कि भाई सॉइल का क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि ये उसमें सर आता है कंडीशन में केवल आ जाता है टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन की, उसको टॉप सॉइल को प्रिजर्व करके आप उसको गार्डनिंग में जहाँ पे भी उसको यूज करेंगे, बट प्रैक्टिस में कितना होता है वो दैट इज डिफरेंट थिंग।
बहुत ही, क्योंकि नेचुरल ड्रेनेज बदल जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा नेचुरल ड्रेनेज है वही तबाह होता चला जा रहा है, और जब ड्रेनेज ही बिगड़ जाएगा तो हमारी सॉइल का करेक्टर कैसे मेंटेन होगा। तो मुझे लगता है कि सॉइल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो जैसे त्यागी साहब ने कहा कि इसके लिए कोई लॉ नहीं है अभी तक, एयर के लिए या वाटर के लिए। ये निगलेक्टेड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आदमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है इमीडिएटली, इसलिए आदमी का ध्यान नहीं है। और जो हमारे डेवलपर्स हैं, जो डेवलपिंग पैसा बनाने में लगे हुए हैं, एक तरह से कहना चाहिए, वो इसको बेइंतहा बेदर्दी से इसका सॉइल का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसकी तरफ अगर बहुत जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत विकराल रूप ले लेगी थोड़े दिनों के बाद ये समस्या। इसलिए आपने जो टॉपिक चूज किया बहुत अच्छा किया, और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने इस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाया। और हमारे सदगुरु जी ने भी इसका अभियान शुरू किया है। इट विल आल्सो क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस इन द सोसाइटी। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हमें आगे इसके ऊपर और 2-4 दफा बातचीत करके इसको बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे आएंगे। हो सकता है नेक्स्ट में वी कैन टेक क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, और इनको ग्राउंड में पर्टिकुलरली जो कंट्री साइड आज के त्यागी जी ने बात की, रूरल एरिया में कैसे इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। संजीव अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, इसलिए जो है यूनाइटेड नेशंस जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे गुप्ता जी ने अभी बताया कि हमारा जो ऐसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, माइनिंग हो रही है, तो इसमें हमारा सॉइल का लॉस बहुत हो रहा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल कवर ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें सॉइल एक आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेट्रिक्स। सॉइल के बिना तो बोलते हैं ना हम, धरती सबसे इम्पोर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आपका ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। तो सॉइल को वाकई में बहुत सालों से इग्नोर किया गया है, और इसको अब ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कंटामिनेशन, सॉइल कंटामिनेशन एक बार हो गया तो इसको सर रिक्लेम करना इज वेरी वेरी कॉस्टली। तो सॉइल कंटामिनेशन जो हो रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से या दूसरे और रीजन की वजह से, या लॉस हो रहा है इरोजन की वजह से, वो हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मैं अब इसको सम अप करना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बज गया है और संडे का लंच का टाइम होता है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा लास्ट में कि हमारे सभी जितने भी पुराणों में बहुत अच्छा सा कहा गया है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छे से कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच से बना शरीरा। तो हमारा जो क्षितिजल पावक गगन समीरा जो 5 चीजें हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो हमें इनको सबको प्रोडक्शन, तो हम तो सब बाकी चीजों में तो फोकस कर रहे हैं, जल भी, वायु में भी, और अग्नि एनर्जी वगैरह पे फोकस कर रहे हैं, सभी है। और आकाश में भी हम अपना दो पोल्यूशन वहां भी अब होने लगा है। बट अर्थ पे जो हम कह रहे हैं कि वो प्रोडक्शन सॉइल का है, उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। तो हमें जो क्षितिजल पावक गगन समीरा में, तो पृथ्वी पे भी जो सॉइल प्रोडक्शन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और मैं आज ये कहना चाहूंगा कि हम लोग बात करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि वी आर सन ऑफ सॉइल। हमारा जो है इंडिया में हम लोग बात करते हैं कि सन ऑफ सॉइल कहने से नहीं होगा। वी हैव टू जो अपना एक सन का जो है ड्यूटी भी निभानी है ये। और आज तो फादर्स डे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज सबको। आई थिंक फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑल्सो। आज फादर्स डे है, तो हम सन ऑफ सॉइल है, तो हमारी ड्यूटी है अपने फादर के प्रति एक अच्छी जो है कि उसको हम क्या एक अच्छा देके जाएं। और चाहे वो फादर हो जो और मदर अर्थ हो, तो हमारी दोनों की ड्यूटी है। और मदर फादर तो हमारे भगवान होते हैं। तो आई थिंक ये आज के हमने सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि हमें आपकी ड्यूटी, जो भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं और जो इसको आगे जो शेयर करके यूट्यूब और फेसबुक से जुड़े हैं और इसको शेयर करके सुनेंगे, तो इससे बेनिफिट होंगे और आगे चेन बनेगी। तो हमारा यही जो डॉक्टर के अग्रवाल का जो लाइफ में एक ही पार्ट था कि कैसे जो है सबसे ज्यादा लोगों का कल्याण हो, सबसे ज्यादा लोग जो है सर्वे भवन सुखना उनकी उसी थीम लेके चले, उसी पे काम किया। वही वो लाइफ अपनी जाते जाते भी अपनी लाइफ इसी तरह से देखे गए कि हम जो पब्लिक हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए पूरी लाइफ को डिवोट करके चले गए। उसी में हमारी टीम, ये सब लोग आपके सहयोग से ये काम कर रही है। तो आई थिंक ये चेन चलती रहेगी। और आज के जो इसमें जो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब फेसबुक पे, तो और लोग शेयर करें, इससे बेनिफिट होंगे। और हम हो सकता है कि अगर नेक्स्ट में भी इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने एक्सपर्ट से भी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलरेडी कहीं पे अवेलेबल हैं, तो उसको और एक तरह से एक कैंपेन की तरह और ये हमारे माध्यम से जो ऑनलाइन माध्यम से और जाएं, तो हो सकता है हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको लें। और यही के सबके साथ सबका धन्यवाद करते हुए मीटिंग को समाप्त करें।